Hello students, today I am going to deliver a lecture on the topic QBD, which is quality by design. Since the introduction of this concept, it has been accepted the quality of the pharmaceutical products should be designed and built during the manufacturing process. So, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब manufacturing process किया जा रहा है, उस दौरान हम product की quality को design कर सकते हैं. Now the definition of QBD as per the ICH Q8 guidelines, a systematic approach to development that begins with predefined objectives and emphasizes products and process understanding and process control based on sound science and quality risk management. तो इस definition जो ICH Q8 guidelines के हिसाब से है, इसमें हम जो डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट का उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हों और हम प्रोडक्ट को प्रोसेस को पूरी तरह समझ सकें, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड साइंस नॉलेज वी हैव एंड द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. नाउ फॉर दिस quality control or the quality assurance, various guidelines have been issued by the ICH Q8, which is pharmaceutical development, ICH Q9 quality risk management, ICH Q10 pharmaceutical quality system, ICH Q11 development and manufacturing of drug substances. Now, what are the goals of QBD? The first goal is to achieve meaningful product quality specifications. Second is to increase process capability and reduce product variability. To increase pharmaceutical development and manufacturing efficiency, to enhance the cause effect analysis and regulatory flexibility. तो जो हमारा मेन मकसद है QBD यूज करने का वो ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को हम अचीव कर सकें, प्रोसेस की कैपेबिलिटी उसकी क्षमता को बढ़ा सकें और प्रोडक्ट्स के जो बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कम से कम रख सकें, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस बढ़ा सकें और रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी को हम बढ़ा सकें. Now the steps of the pharmaceutical quality by design. QBD comprises all elements of pharmaceutical development which will allow to design a quality product and its manufacturing process to consistently deliver the intended performance concerning its safety and efficacy. तो QBD हमें क्या अलाउ कर रही है कि हम एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट डिजाइन कर सकें, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन कर सकें ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ड्रग को डिलीवर कर सके और उसकी सेफ्टी और एफिकेसी भी बरकरार रहे. Using the QBD approach, pharmaceutical development will provide a complete understanding of the product and its manufacturing process. इस QBD अप्रोच से हम प्रोडक्ट को पूरी तरह समझ पाएंगे और उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको भी हम पूरे तरीके से समझ सकते हैं. Now, the first is we have to establish a quality target product profile. हमें जो अपना प्रोडक्ट चाहिए उसके अंदर उसकी क्वालिटी का क्या प्रोफाइल होना चाहिए. So QTPP, which is Quality Target Product Profile, is a summary of quality characteristics of the pharmaceutical product that must be achieved to guarantee safety and efficacy. In other words, we can say QTPP consists the definition of expectations in the final pharmaceutical product. हमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसमें हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वही कहलाता है आपका QTPP. What are the things which can be included in QTPP are the route of administration. We have to think upon that, the dosage forms, delivery system, dosage strength, container closure system, factors affecting the pharmacokinetic properties, and the product quality criteria such like we have the sterility, purity, stability, etc. So before deciding the QTPP, we have to consider all these factors, and depending upon these factors, we have to define the quality target product profile. Now next, the concept is CQA. The full form is critical quality attributes. It is the second step. What are CQA? CQA is a chemical, physical, biological or microbiological properties
or characteristics of a pharmaceutical product, it may be in process or finished, that must be within appropriate specifications to ensure the quality. प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, यस, इन प्रोसेस प्रोडक्ट में या फिनिश प्रोडक्ट में जो होनी चाहिए वो कहलाती है आपकी सीक्यूए. अब सीक्यू में क्या क्या चीज आ सकती हैं? इट में इंक्लूड द आइडेंटिटी, एसे, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी, डिग्रेडेशन, प्रोडक्ट रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, ड्रग रिलीज और डिसोल्यूशन, मॉइस्चर कंटेंट, microbial limits, and physical properties like color, shape, size, and friability. So these CQ are derived from the QTPP and they are used as a guide product and process development. Next, there are two important things. One is critical material attributes called as CMA and critical process parameters called as CPP. Now, what is critical material attributes? They consist of the physical, chemical, biological or microbiological properties that input the material must comply to ensure the desired CQA. हमें जो अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे? हमारे जो इनपुट मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो कहलाती हैं आपके CMA और द क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स. Next, we have on the other hand are the critical process parameters. ये क्या है? They are the process parameters as mixing time है, stirring speed, temperature, airflow that must be monitored before or during the process to ensure the desired CQA. तो CQA जो quality attributes चाहिए उनके लिए जो भी parameters लगेंगे, process हमारे लगेंगे, उनको कैसे हमें monitor करना है ताकि हम इन quality attributes को achieve कर सकें. Next important concept is design space. It is a multi-dimensional combination interaction of all the variables in the process parameters demonstrated to provide quality assurance. एक imaginary space है जिसमें अलग अलग चीजें कंबाइन हो रही हैं, हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कंबाइन हो रहे हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट्स कंबाइन हो रहे हैं, हमारे प्रोसेस पैरामीटर्स कंबाइन हो रहे हैं ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव कर सकें. दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन स्पेस. नाउ दिस a simple figure which can be understood to understand the QBD. In the inner circle, we say product control. We have to control the product. We have to control the process control. We have to specify the process specifications. And similarly, we have to specify the product specification. So we have to understand the product, and during all these parameters, we should be ready for the continuous improvement, which is shown in the outer circle. Now, what are the steps which are involved in the QBD methodology? First of all, as I told you, we have to define the desired performance of the product, and we have to identify the quality target product profile. Second, we have to identify the CQA, critical quality attributes, जो हमें product में चाहिए. Then we have to identify the possible CMAs, critical material attributes, CPPs, critical process parameters. Now we have to set up and execute DOE, that is design of experiments. And when experiments conduct करने होंगे, in which we have to link the CMAs and CPPs to get the CQAs, and we have to get the enough information so that we can achieve the QTPP. So we have to design a process. A space should be defined leading to the end product. जो end product हमारा आएगा उसके अंदर क्या होंगे? QTPP यानी quality target product profile मौजूद रहेंगे. Then the fifth step, very important step, we have to identify the sources of variability. There are sources which can cause variation. We have to identify those sources. We have to control those variations. And the last is that we have to continually monitor and improve the manufacturing process to ensure the consistent product quality. So पूरे process को हमें लगातार monitor करना होगा और कैसे इसको process को improve करने होगा वो हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने product की quality को assure कर सकें. The same steps of the QBD are now shown as a figure. We can see the first step is we have to define the QTPP and CQA. Second is prioritizing the CMA and CPPs. Then the design of experiment-based data analysis. Then model development, and finally the design space development.
So I hope you have understood the basics of QBD. Thank you so much and have a nice day.